Hi everyone, this is Aida Sultan, your host for today's session. Today we have another session in which we are going to talk about the rise of digital content creation in Pakistan as a career. And to talk about it, we have a special guest with us today who is a digital content creator, and she is one of the amazing individuals that I've come across. And she makes very relatable content, and that is why I am personally a big fan of her. So let's welcome Zainab. Hello, Zainab. How are you feeling today? Hi, Isa. I'm feeling great today. Thank you so much for having me on this mini interview conversation. I'm really glad to be here. Same. I'm really glad to, have this conversation with you. So, you can introduce yourself to our audiences and, then we can dive and begin Okay. into. Okay. Okay. Hey guys, so I am Zainab. My full name is Zainab Tariq, or Instagram pe I am widely known by the name Baker Tooth. So I am going to begin with my journey, how it all started and how it is going right now. Right now, I can say कि इस टाइम पे even social media creators की भी बहुत peak चल रही है. People are making tons and tons of money from it. It has turned into this a full-time career for people. And nobody actually really expected, especially in the South Asian countries, के कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है. हालांकि दुनिया भर में ये सब काफी अरसे से ही चल रहा है. और I basically how it all started. Okay, firstly, let me tell you where my account stands at the moment. So, Bekartooth, it is basically a Urdu Punjabi word which means someone जिसके करतूत अच्छे ना हो. ये अक्सर लफ्ज हमने शायद अपनी if somebody has a पंजाबी बैकग्राउंड, उन्होंने अपनी माओं के मुंह से सुना होगा कि बहुत बेकरतूत हो तुम, या फिर तुम्हारे करतूत अच्छे नहीं है. Somebody with ill doings. So I personally have been kind of I always felt like a cast out, even when I was in high school, when I was in middle school, because I have always been a very sensitive, emotionally intelligent kid. और अनफॉर्चुनेटली हमारे देसी कल्चर में इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इफ अ किड इज वेरी सेंसिटिव और दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. Even I as a kid, I even got bullied by adult females, my teachers. So it was a very sad thing, and I think somewhere kahin na kahin it left a scar on me. Or in 2013 I learned about Instagram. Not in 2013, in early 2010s I learned about social media. और उस जमाने में फेसबुक होता था. और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई लर्न अबाउट इंस्टाग्राम, और मुझे थोड़ा मेकअप का शौक जो है वो शुरू हुआ. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई कैन शो माय क्रिएटिविटी. और ऊपर से हमारे देसी हाउस होल्ड में ये भी होता है कि यू अ किड ओनली गेट्स टू ऑप्शंस, या तो यू कैन बी अ डॉक्टर और यू कैन बी एन इंजीनियर, दैट्स इट. I तो मेरी भी यही स्टोरी है. यस, मेरी भी यही स्टोरी है. माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, और वो शुरू से ही डॉक्टर 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 डॉक्टर. थोड़ा सा अगर आर्ट्स की तरफ जाने की कोशिश की है तो नहीं, वहां पे नहीं जाना. यू जस्ट हैव टू स्टडी. दिन में 11 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है. और देर वॉज अ टाइम कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और आई एक्चुअली यूज टू स्टडी फॉर लाइक 11 आवर्स स्ट्रेट. और मतलब मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि मतलब आई कांट डू इट, मतलब आई कांट इवन कॉन्सेंट्रेट. मतलब मैं बहुत ज्यादा देर तक कोई बुक नहीं पढ़ सकती थी. और आई ऑलवेज यूज टू माई माइंड इज इवन अभी राइट नाउ. The reason I believe that I'm very creative is because my mind is always going, on like 200 yes, kilometers an observing, hour yeah. all You, the time. Yeah, exactly. So there are like always ideas coming in. Or even let me show you something. ये मैं अभी अपना ये start करने से पहले I was like I had some papers lying around my room. I was like I'll just throw them away. These are like all the scripts I have written. That's how wow. my brain works. And this is just for content creation. So Yeah. ये भी because I have the bin right next to my table. So मैंने ये भी टेबल पे रखे कि मैंने फेंकती हूँ because मैंने ये सारा content बना लिया हुआ है. So basically this is my story. I was meant to be a doctor, और आई जस्ट कुडंट कॉन्सेंट्रेट. बहुत देर तक बैठ के मैं रट्टे नहीं मार सकती थी. और अभी हमारा पाकिस्तान में यही अभी तक यही सीन चल हाँ, रहा है ना, ये स्पेशली
इस तरह के फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में आपने रट्टा ही मारना है। हाँ और उसमें भी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ऑब्वियसली कुछ डेफिनेशंस का आपने मारना they ही keep पड़ेगा। teaching the same things, the old methods. मतलब कि innovation is Exactly. in education में, like in abroad there is innovation but they are not bringing that innovation. I think that's what you're pointing out at. Now there is no innovation, we are just keep repeating the same things और हम grow हो रहे हैं एग्जैक्टली, but हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, so there's एग्जैक्टली। no value. और मेरा इवन बचपन में भी यही सवाल रहता था कि मैं जिस बंदे को देखती थी ना अपनी फैमिली में, फलाना डॉक्टर बन रहा है, फलाना वो भी डॉक्टर, आई वाज लाइक भाई सबने, और ये मैं बचपन में ये चीज सोचती थी, और इतना कोई बचपन नहीं, मतलब लाइक आई थिंक Yeah, 7 years ago। 7 years हाँ, ago, तो मैं हाँ. सोचती थी कि यार अगर, हाँ अगर सबने ही डॉक्टर बनना है तो फिर मरीज किसने बनना है भाई, मतलब एवरीबडी आई नो इज इन मेडिकल, मेडिकल कॉलेजेस में जा Yeah. रहे हैं। और आई थिंक उस टाइम पे बड़ा बूम भी था मेडिकल का, मतलब हर बंदा मेडिकल हाँ में जा ये रहा भी है। था, ये बिल्कुल. हाँ, एक टाइम पे ये था। अभी आई थिंक थोड़ा, थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई हैव नॉट बीन इन टच Hmm. विद इस ये वाला फील्ड नाउ, बट आई थिंक अब थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया No, है। I've also gone through the same cycle, and at that point where I had to choose between medical if I want to go forward with it. Like at that time, my uncle told me that, there are a lot of other opportunities that you can, explore. And basically, so अब ये चीज it is breaking कि if you don't have any interest in medical, it is not necessary कि आप वहीं जाओ. The acceptance has increased from the parents basically, जो कि हमारे main एग्जैक्टली, stakeholders है ना, they have accepted that our child can go beyond medical field. So yeah. एग्जैक्टली, यस। सो आई हैव अ यंगर सिस्टर एज वेल। सो मेरे टाइम पे तो वो कोई ऑप्शन नहीं था ना भाई, नहीं जी मेडिकल ही करना है। अच्छा, और वो आई कुडंट कंप्लीट माई स्टोरी पहले। सो जी. आई कुडंट कॉन्सेंट्रेट, में बैठ के मतलब रट्टे नहीं लगा सकती थी। और मेरा हमेशा मतलब कि एक्टिंग करनी है मैंने, मुझे एडिटिंग में बहुत मजा आता था, क्योंकि एट टाइम्स कभी कभार जो 1-2 घंटा मुझे फ्री मिलता था, बैठ के मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती थी उस जमाने में, लाइक बैक इन 2012-13। और फिर उनको एडिट करने में मुझे बहुत मजा आता था। मुझे थोड़ा वो कोई मूवी देखी है उसका सीन दोबारा री इनैक्ट करने में बहुत मजा आता था। सो एनीवे, जब एम कैट का टाइम चल रहा था, आई थिंक वो टेस्ट इज नाउ कॉल्ड MD कैट आई गेस, Yes, yes, yes. बट उस टाइम पे इट यूज टू बी कॉल्ड जस्ट एम कैट। Mhm. सो जब उसका टाइम आया तो आई वाज लाइक आई एम डन, मतलब आई जस्ट कांट टेक इट एनीमोर। आई डोंट थिंक सो मेडिकल इज डेस्टिन्ड, मतलब आई एम डेस्टिन्ड टू बी इन द मेडिकल फील्ड। आई हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंड। और मेरा हर टीचर हमेशा यही कहता था, फर्स्टली शी इज वेरी सेंसिटिव, सेकेंडली शी हैज अ क्रिएटिव माइंड, शी शुड बी समवेयर इन द आर्ट्स, बट इट वाज नॉट एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन। सो Mhm. आई कुडंट पास माई एम कैट। और उसके बाद दैट इज व्हेन लाइक आई एक्चुअली कन्फ्रंटेड माय पेरेंट्स एंड आई एक्चुअली टोल्ड देम कि भाई आप लोग मुझे जबरदस्ती इस चीज में घुसा रहे हैं, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। मतलब हाँ, मतलब आई नो आई एम अ स्मार्ट कुकी, मैं रट्टे मार के मैं एंटर हो जाऊंगी, आई कैन गेट इनटू अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वेरी इजीली, बट आई डोंट थिंक सो आई एम डेस्टिन्ड टू बी फॉर दिस फील्ड। एनीवे, उसके बाद वी ऑप्टेड फॉर अ बिजनेस ऑप्शन। I because my father has a business background, so we were like okay then chalo theek hai, I'll just go for business degree। So मैंने वो business degree की bachelor's किया मैंने पाकिस्तान से, and then उसके बाद I moved to Brighton for my master's and some other courses। So that is like a slight history of how I transitioned from being a medical kid, जिसके Yes, yes. कंधों पे सारे वो ख्वाब होते हैं, एग्जैक्टली ये डॉक्टर बनेगा, टू वेयर आई एम राइट नाउ। और इवन माई सिस्टर राइट नाउ व्हेन शी वाज, जब उसका स्टेज आया ना कि अच्छा मेडिकल करना है या कुछ और, उसके लिए मेडिकल वाजंट इवन एन ऑप्शन। दे वर Hmm. लाइक बेटा मतलब डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। Same, सो yeah. With younger सो siblings, make a way. हाँ. exactly, they make their way, yeah. Hmm. So then she was like, my sister was like, okay, no, I want to go for law. So now she's a law student here in London. So yeah, I'm really glad that and I actually take the whole credit for this. कि I made my parents realize certain things.
Yes. और उसके बाद आई वॉज हेयर फॉर माई मास्टर्स इन 2020। कोरोना वगैरह ये सब होना शुरू हो गया। और शुरू मुझे वीडियो एडिटिंग, वीडियो वीडियो क्रिएशन, लाइक आई हैव मेंशन, मुझे इसका शुरू से ही बहुत शौक था। आई ऑलवेज यूज टू गेट दिस थ्रिल, दिस रश, जब मैं वीडियो एडिट करती थी और जब एक फाइनल प्रोडक्ट मेरे सामने आती थी। सो आई वॉज हेयर, वी वर स्टक हेयर, सारी फ्लाइट्स बंद होगी पाकिस्तान जाने की। एंड बिकॉज हेयर आपके घर कुछ बहुत बड़े नहीं होते। Hmm. Even if you have like a 2 bedroom apartment, but it's a small apartment. Small apartment, So yeah. yeah, it started getting to me क्योंकि universities बंद है, सब कुछ बंद है. So that is when I decided कि okay, I have been thinking about it from past 5 to 6 years कि मुझे अपना कुछ public platform मैंने कुछ बनाना है जहाँ पे I can put all of my creativity out there. So that is when I came up with the account name Baker Tooth. क्योंकि I also come from a slightly conservative family. My parents are not like that, but the extended family, they're very conservative. उनके लिए social media, ये acting, ये मतलब it is not acceptable. And also considering the masses and the society, a Yeah. woman is always called bad names, Hmm. especially when she becomes in a comes in a position of power, right? Yeah. So I was like, यार लोगों ने मुझे गालियां तो देनी देनी है। तुम Hmm. लड़की हो, तुम ये क्या कर रही हो, तुम कैसे कपड़े पहन रही हो। Hmm. इवन दो आई थिंक दैट आई स्टिल ड्रेस अप वेरी मॉडेस्टली, बट फिर भी आई डू And गेट कॉल्ड this आउट। comes because your mindset hai. Yeah, I believe that, this is the mindset they come from. If they see a Yes, girl in power, they feel intimidated, I guess, so much by that they. yes, Mm. I agree with you. Yes. So in it was the end of 2020. So that is when I decided कि यार लोगों ने गालियां तो देनी देनी है, ठीक है। शायद कोई मेरा अपना भी उठ के बोले कि क्या क्या तुम क्या हरकतें कर रही हो। So Mm. why not I call myself Baker Tooth शुरू से ही, So why not Baker Tooth is my identity, like a rebel. You can call me whatever you want to, I don't care. So that is how Baker Tooth came into existence. And I started off by posting TikTok videos. मैं TikTok पे ये funny videos जो है कुछ बनाती थी, relatable videos उस Mm. time पे I started posting them. Or they started getting picked up, people started liking the videos. Or aista aista, then over the span of 2 years, now I have more than 230,000 followers. And I'm pretty sure like people know me. I think a certain niche knows me. Yes. Yeah. So people know me even here in London. At times, whenever I'm in London or in Brighton, I do get recognized by young women, and it's actually a very great feeling. Yeah. Or especially when the younger people, they recognize me and they come up to me and they say, "Oh, we get inspired by you a lot." So it makes me feel like, अच्छा चलो मेरा purpose पूरा हो रहा है, because Same. Mm. हाँ मेरा purpose पूरा I हो can relate to it exactly. When I found your content and your account, I thought, this is something that needs to be, spoken about. The things you speak about, they are very relatable. That, I think girl can relate to it because they have gone through that stage. exactly, Yeah. yes. Yes. So even at times, I think starting में I started off with यही relatable, funny kid content. फिर आहिस्ता आहिस्ता transition हुआ कि नहीं, I need to talk about the issues that शायद nobody else is talking about, but not in a serious way, in a maybe in a funny way, जिससे क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की कि सोशल मीडिया पे ऑडियंस का, स्पेशली व्हेन योर टारगेट ऑडियंस इज जेन जी, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ अटेंशन स्पैन, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. सो दे जस्ट वांट टू स्वाइप स्वाइप स्वाइप. सो Right. आई वाज लाइक, व्हाई नॉट just create छोटे छोटे से bits, Mm. something that has a meaning in it. So that is how it all started. I have spoken about street harassment, not in a serious way, in a funny way. Mm. Or people, young women especially, they have absolutely loved that series.
Then उसके बाद बीच में I also started educating the young girls के how some people just look down on you and they just try to mansplain everything to you. And what is mansplaining? How it is wrong? How you need to uh, be a main character in your own life. Yes. So Alhamdulillah, things have been going really great. And yes, it's a great feeling to know that I am actually, मेरा वो purpose, मेरा मकसद जो है वो पूरा हो रहा है. अभी recently, ever since Instagram introduced Reels, so मेरा content जो है वो इंडिया में भी जाना शुरू हो गया, बांग्लादेश में भी जाना शुरू हो गया. So पहले मेरे बायो में सिर्फ लिखा होता था कि इंस्पायरिंग एंड एम्पावरिंग पाकिस्तानी वुमेन. सो जब ये होना शुरू हुआ और मेरी एक दो वीडियोस दे वेंट लाइक दे गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोइंग एंड व्यूज फ्रॉम इंडिया स्पेशली. There was this one video जिसमें I was talking about when a girl is in a very comfortable state in her own room, in her own space, and somebody suddenly walks in. So वो different poses, like you put the pillow in front of you or you try to grab your shirt like this. So it got like crazy views, especially from India, and all the big creators in India, they were reposting it. So it was a great feeling. और उसके बाद that is the point when I changed my bio. मेरे बायो में पहले it was written inspiring and empowering Pakistani women, and then it changed to inspiring and empowering South Asian women. Yeah, so yes, abhi bhi the account is growing. I keep on getting ideas, new ideas every other day. I keep on writing. That is exactly where most of my mental energy go. Or साथ साथ I do have a thesis. I am working on my thesis as well. And then ये सारा काम है. And yeah, things have been alhamdulillah great, but not all great. बीच में कुछ कह लो आपके बहुत वो स्टीप डाउनफॉल जो हैं वो भी आते हैं. मुझे शुरू में बहुत मसला होता था कि यार मतलब क्योंकि माय फिलॉसफी इज दैट आई डोंट वांट टू फॉलो एनी ट्रेंड. मतलब एट टाइम्स ट्रेंड शुरू हो जाता है कि हर बंदा उस ट्रेंड को फॉलो करे और उस पे आपको व्यूज भी आ रहे हैं. मेरी शुरू से ही फिलॉसफी रही है, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो एनी ट्रेंड, आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी पेस्ट एनी पीस ऑफ कंटेंट. इंस्पिरेशन मैं किसी से ले सकती हूँ, बट इट हैज टू हैव दैट बेकर टूथ थिंग इन इट, माय सिग्नेचर थिंग इन इट. एंड मेरा ब्रांड जो मैंने सारा वो ब्रांड बिल्ड किया वो है ही पूरे का पूरा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर. लाइक आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट. इवन एट टाइम्स आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस अदर इंटरव्यू पीस जिसपे आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी हेयर अमंग साउथ एशियन वुमेन. क्योंकि at times I even if I have not done my facial hair, मतलब I have my upper lips undone, I have my side of the face undone, I will still post stories because I don't think so that actually defines आपका कोई भी किसी भी किस्म का ब्यूटी स्टैंडर्ड. एंड even when my sister, I have actually seen her when she was young, she was actually bullied for her body hair, right? तो मेरा शुरू से ही बहुत वो कह लो अच्छा सीन रहा है. I don't have a lot of body hair, but she used to always have a lot of body hair and she was bullied for it. मजाक मजाक में friends ने कुछ कहीं से कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया. So I did actually notice this thing, and like what I'm trying to say is that you my want to brand break that cycle, that transparency. you breaking that cycle because we feel कि अगर हमारी अगर हम प्रॉपरली हमारी वो ब्यूटी स्टैंडर्ड मैट नहीं हो रहा तो हम ना बाहर नहीं जा सकते. हम we can't face people, but you want to break that cycle and you want to build your brand. The unique selling point is transparency. Your brand is all about that. I perceive as your target market, I see it as the USP that you are very transparent. You also started something, own your skin, where people send you the pictures, where you can own, like you can have scars, you can have, nobody has a perfect skin. So that kind of thing you are trying to build ke bhai aap
अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील करें, आपको वो स्टैंडर्ड्स मीट करने की जरूरत नहीं है कि अगर Exactly, अगर yes. ये टिक बॉक्स नहीं हो रहा तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते. सो that's really appreciated because we need more people to talk about it. And I'm glad you are talking about the things that people are not talking about. To be honest, Yes. मैंने नहीं, I haven't seen many creators talking about these things, but you just convey that message in all your videos in a very subtle way. And the comedy bhi hoti hai in a skit way that the message is conveyed to the audience. They know that what you are Yes. talking about. So Yes. now, considering the dynamics of the recent world, what is your opinion that what is the future of digital media? How is it growing in the form, like as a digital content creator? How you see your future? So, to be very honest, things have been looking really good from past couple years for digital creators. अभी आप अगर कभी कभार टीवी सीरीज भी देखें, द टेलीविजन कमर्शियल्स, उसमें भी दे आर टेकिंग इन्फ्लुएंसर्स. Yes. मॉडलिंग गिग्स वगैरह में भी इन्फ्लुएंसर्स आगे आ रहे हैं, बिकॉज I'm not saying कि एक्टर्स थोड़ा कह लो पीछे हो गए हैं और सेलिब्रिटीज पीछे हो गए हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन्फ्लुएंसर एक ऐसा इंसान है जिससे अवाम डायरेक्टली रिलेट कर सकती है. बेशक यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बेशक you are using filters and the audience is seeing that you're using filters, but still whoever the creator is, they build this relationship with the audience. आप डेली स्टोरीज लगा रहे हो, आपको ऑडियंस ग्रो करते हुए देखती है ओवर द years या ओवर द मंथ्स. सो ऑडियंस आपके साथ एक वो बहुत क्लोज कनेक्शन बिल्ड कर लेती है. वेयर एज शुरू शुरू से ही सेलिब्रिटीज, they have been taught and what they have been doing is कि बहुत ज्यादा relatable नहीं होना, बहुत ज्यादा transparent नहीं होना. हाँ. So things are looking very good for creators, for digital creators, and even in the future, I think it is going to be like this whole marketing industry is going to be dominated by influencers. Abhi bhi, if we talk about generating revenue from being a creator, I will talk about my journey. मुझे नहीं आइडिया था आप इससे पैसे कमा सकते हो. मैं बहुत पहले पहले अगर किसी इन्फ्लुएंसर को देखती थी, मुझे यही होता था कि यार अच्छा ये इसी तरह आप मैक्सिमम पैसे कमाते हो कि गए हो आप कहीं रेस्टोरेंट में, आपने उसे कहा है कि यार मुझे ये चीज फ्री में दे दो, मैं इन रिटर्न तुम्हारा रिव्यू लिख दूंगा. मुझे सिर्फ ये पता था, मुझे ये नहीं पता था कि यू कैन एक्चुअली गेट पेड, यू कैन एक्चुअली मेक लाइक अ होल करियर आउट ऑफ इट. मेरा सबसे पहला जो पेड पीस ऑफ कंटेंट था, आई डिड दैट फॉर 3,000 रुपीज. और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था. And it was for like a non-profit organization. It was for mental health. So it was for 3,000 rupees. और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता when I started building this thing up, और मुझे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, मुझे मार्केटिंग एजेंसीज ने अप्रोच करना शुरू किया on behalf of brands. That is when I learned कि wow अच्छा okay. और इस अब ये नहीं है कि हर इंसान जिसका फॉर एग्जाम्पल 500K फॉलोअर है एंड देयर एंगेजमेंट इज नॉट नाइस, दे विल गेट पेड द सेम अमाउंट जितनी के शायद किसी इंसान की जिसकी एंगेजमेंट इज नाइस, तो उसको पैसे मिलेंगे. Now, what is engagement? I'm pretty sure if some business student is listening to this, so they might know. But engagement is basically how many people are actually engaging with your content. Yes. How many people are liking, how many people are commenting, how many people are saving. So एक वो percentage बन जाती है. And an average creator has between a big creator has between 5 to 3% engagement, और ये ठीक समझी जाती है. बट राइट नाउ देयर आर लाइक a lot of creators जिनकी between 15 to 11% भी है. So there are some accounts who have like a follower count of 500K, but their engagement is like 2% or 1%. मतलब आपका 500K followers है पर आपकी किसी फोटो पे या वीडियो पे सिर्फ 500 लाइक आ रहा है.
Whereas on the other hand, if somebody has 200K followers और उनकी एक वीडियो पे चलो 20,000 लाइक आ रहा है या चलो 30,000 आ रहा है, so obviously the brand is going to pay the other person. Other So person. at this point, the follower count doesn't matter. The Yeah, engagement matters. follower How count much people बिल्कुल are reach irrelevant हो कितना जाता कर रहे हो. है. It's So, like you exactly, have yes. mentioned that, और yeah, you mentioned it can be, good source of revenue. And we talked about, how it is a good emerging career path. It has already been established, but, this digital content creation has a, a good, future to say that. So, yes, exactly. No, it has a really good future. So, like what you believe that which are the platforms that can be, utilized to, maximize the penetration of our content. Like I follow you on Instagram, and I think, mostly people use Instagram, but do you feel that there are also other platforms that can be used to, to reach your target market? So if I talk about my target market, जो मेरी टारगेट मार्केट है वो इंस्टाग्राम भी यूज करती है और वो टिकटॉक भी यूज करती है. एंड आई डू नो कि इस टाइम पे टिकटॉक इज इन मोनोपोली. टिकटॉक इज वो हर चीज में Yeah. टिकटॉक इज एट फ्रंट. Hmm. बट इफ वी टॉक अबाउट द नीशेस, टिकटॉक के नीश में बहुत सारे मैसेज आते हैं जहां पे शायद somebody like me वो एक्सेप्ट ना किया जाए. Somebody who wants to be transparent, somebody who at times make videos in her very natural habitat, ठीक है, or somebody who's not gora chitta with blue eyes, patla. टिकटॉक, पाकिस्तान टिकटॉक अभी भी वहीं पे है अभी, because the masses use it and the masses are still not aware of a lot of things. So मुझे शुरू शुरू में बहुत डर लगता था टिकटॉक पे जाते हुए, क्योंकि आपका comment section, like, क्योंकि I have seen certain creators and I'm really proud of them कि they are very active on TikTok Pakistan, but then the comment section is just, it's so disgusting, filled with the creeps, and it's really scary. I did start posting the content I post on Instagram on TikTok. थोड़ा बहुत इस तरह का आया, but I think now TikTok is आहिस्ता आहिस्ता they're updating their algorithm कि आपकी ही तरह की नीश के पास या people who are interested in body positivity or skin positivity, उनके पास आपका content जाए. But then again, I don't think so. If you are into transparency or you are not patla, gori chatti, Not a fulfilling their beautiful looking standards. woman. Exactly. You cannot grow on TikTok at this point in Pakistan. So I believe, yes, Instagram right now is it's the a better platform. Yeah. thing for me. Yeah. So Zainab, we can wrap it up. Do you want to, say anything in last? If you want to add anything. So yes, I would like to add, I would like to touch slightly on mental health as well. कि मैंने बहुत सारी अच्छी बातें तो की हैं ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में, बट मैंने जो एक चीज नहीं की, बात जिसके बारे में नहीं की, वो ये है कि द टॉल इट टेक्स ऑन योर मेंटल हेल्थ when you're a creative, when you're a creator person, when you're a creator and a creative person and your mind is going like all the time इतनी स्पीड से जा रहा है, so at times you lose track of reality. और at times हम कहते तो हैं, हर क्रिएटर आपको बोलेगा कि नहीं यार मेरे लिए फॉलोअर काउंट नहीं मैटर करता, फॉलोअर काउंट नहीं मैटर करता. भाई कैसे मैटर नहीं करता? मतलब आपने 2 सालों की मेहनत में ये सब जमा किया. एंगेजमेंट is the one thing that matters the most, but still कहीं ना कहीं आपका फॉलोअर काउंट जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है. यस, एंगेजमेंट स्टिल इज ऑन द टॉप, बट फिर भी फॉलोअर काउंट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली
it is important somewhere. So at times you lose track of reality, और आप बस इन्हीं numbers में आप घुस जाते हो. मेरी पिछली वीडियो में अच्छा it did not do good, I need to post a video which does good. अच्छा, what does the audience want? So it's like एक वो आप ना worm hole में फंस जाते हो, and it's a very scary situation. क्योंकि मेरे साथ हुआ है. देयर वाज अ टाइम इन माय जर्नी कि मैं एक स्पॉट पे 4-4 घंटे बैठी रहती थी और मुझे टाइम का पता नहीं चलता था. I used to just go through my content over and over and over and over again just to come up with something that is more relatable. So just don't do that. And I know it's way easier to say कि don't do that, but this is like one of the only and the worst side effect of this career choice. Career, right. So, thank you so much, Zainab, for mentioning that. I, really appreciate it. Because mental health is very important and it takes a toll on you when so many people you are reaching out to it. At some point you get it main usi race mein, I'm just in that race, and you can't stop yourself. But it's important again to reflect and see that why you started and what's your purpose, so that keeps you going. So thank you so much, Zainab, for your time. It was great talking to you. I hope the message is conveyed to the audience, and this session is helpful for them. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me, Aiza. It was lovely talking to you.